Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Guys, in this particular session, we are going to discuss our unit number 41, which is all about your mutual funds. Okay, very interesting one and very easy one and very important one for examination purpose. So, with the help of lots of questions and case studies, we are going to build our concept toward these particular subtopics. Okay, so we will discuss this particular unit also in very detail because we do not we haven't done other concept part and all here. So, with the help of MCQs itself, I'm going to cover the entire concepts as well. All right. So, first, mutual funds, which include the basic introduction, mutual funds and their function, management of mutual funds, evolution of mutual funds, classification, role of mutual fund, supervision, new fund offer, NFO, risk associated with mutual fund. Then we have riskometer, NAV, expense ratio, load, no load, again, strategies for investment in mutual fund, role of mutual fund in the capital market, alternative investment funds. So these are the sub units or subtopics which are generally part of this particular unit. Okay. There are few things which are very important. One, the functions which are generally performed by AMFI, Association of Mutual Funds in India, the role of AMC, Asset Management Company, or the calculation of NAV and load no load type of mutual funds and some broader classification. Okay, so with the help of MCQs, we are going to decode all these unit subtopics in detail. Okay, so first of all, like I hope everybody know the basics of mutual funds. The mutual fund, it's a collective scheme. Okay, so basically let's say there are some group of investors who want to invest in market but they do not have knowledge of market. So for that sake, we have some companies who generally collect or pool the money from those particular prospective investors. Okay. And these companies are generally known as AMC, Asset Management Companies. Okay. And they generally invest, they have one profile in their organization that is known as a fund manager. So they generally invest, the fund manager on behalf of AMC, they generally invested that particular money in the market. It can be into equities or debt or combinations. Okay? So whatever return we generally generate from those particular investment, we generally distribute among the investor. So simply saying, it is a kind of collection or pooling of funds where that fund is get managed by some professionals, those who are generally known as fund managers. And whatever the return, it can be positive or negative, that is generally share among the आपका unit holders. ठीक है? So the market price of mutual fund, which is generally known as net asset value, and there is a very basic formula to calculate NAV, that is the total asset minus liabilities divided by number of units. So mutual funds is a mechanism of pooling resources from public by issuing unit to them and investing the fund so collected in securities in accordance with the objective as disclosed in offer documents. Mutual fund issues unit to investors in accordance with quantum of money invested by them. Then mutual funds are known as the investors of mutual funds are known as unit holders. Okay? So the profit and loss of the mutual fund or plan shared by the investors in proportion to their investment. As you can see, let's say there is a pooling of money, then fund manager invest pooled money in securities, then they generate income and dividend, and income is distributed among the shareholders. So this is the entire journey of your mutual fund. Okay? So basically this, like, you can also eventually they are going to invest that particular one in equities or debt. Okay? But in case like you do not have that much of time to manage your own funds or to keep an eye on the market movements and all. Okay? And if you want your fund should be managed by some
market experts or professionals. So then in that case, you can use or take help of mutual funds, or you can invest in mutual funds. Okay? So nowadays there are so many type of mutual fund. It can be like earlier the traditional classification was equity, debt, and hybrid. But nowadays, apart from these, also we have kind of active passive funds. We have sectorial funds. We have funds or scheme based on market capitalizations और indices. ठीक है, इसके अलावा आपका ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. ठीक है, ओपन एंडेड विच जनरली प्रोवाइड एंट्री एग्जिट ऑप्शंस टू द इन्वेस्टर. दे आर हाईली लिक्विड, वी कैन से. ठीक है, and close ended they have a lock in period. So these kind of things, so they generally comes under this particular one. Okay, so now with the help of MCQs we will be discussing this particular one in detail. Okay? So first question, who is responsible for managing the funds and making investment in various securities? So it is known as asset management company. So that pooling of funds, this pooling of funds, and they have one profile that is known as fund manager, who generally manage or invest that particular fund, okay, in the market. So basically the everything is generally done by AMC or asset management company. A mutual fund is set up in the form of a trust, which has sponsors, trustees, and AMCs, the asset management companies, and custodians. Okay. So the trust is established by a sponsor or more than one sponsor. A sponsor is like promoter of a company. The trustee of the mutual fund hold property for the benefit of unit holders. And AMC approved by SEBI manage the funds by making investment in various type of securities. A custodian who generally handle the documentation part and hold the securities of the various schemes of the mutual funds its custody. The trustee are vested with the general power of superintendents and directions over the AMC. They monitor the performance and compliances of the mutual fund to various regulators laid down by the SEBI. ठीक है, so various regulation laid down by the SEBI. ठीक है, तो ये आपका कुछ major parties who generally going to manage, but eventually that money is get managed by the AMC. ठीक है, and उनके अंदर जितना भी funds है that is generally known as AUM. AUM means asset under management. ठीक है, which of the following statement best explain why mutual funds are considered an attractive investment options for retail investors? ठीक है, so retail investor they have small money. ठीक है, तो और इतना ज़्यादा knowledge नहीं होता है. ठीक है, so if they directly enter in the market, so maybe they entered in some risky securities or they do not know the मार्केट एनालिसिस थिंग्स एंड ऑल. ठीक है, सो दे जनरली गॉट ट्रैप्ड. ठीक है, इसीलिए पिछले कुछ सालों में आपका इंडिया के अंदर एसआईपी का जो कल्चर है दैट मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली आपका चेंज हुआ है. ठीक है, एंड उसी की वजह से बैंक के जो कासा रेशियोज हैं उनके ऊपर आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने के लिए आया है. सो इट हेल्प, दे रिक्वायर हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट. वेरी लो इन्वेस्टमेंट आपका, इवन यू कैन स्टार्ट विद 500 रुपीज. They offer diversification, professional management, and liquidity while allowing investment as low as 500. Okay? So, without any doubt, option B is the right answer for this one. They guarantee fixed return. There is nothing called guarantee because eventually we are going to invest that money in stocks and bonds. Okay? They provide tax benefit but lack professional management. They do provide tax benefit as we have. Equity linked saving scheme which generally are covered under section 80C. ठीक है, but lack नहीं, they are like professional management is there. ठीक है, so second side of this particular statement is also wrong. So B is the right answer. ठीक है, so they all mutual funds allow investor to diversify across multiple securities, reducing risk. ठीक है, they are managed by professionals of professional fund managers who make investment decision to maximize return while mitigating risk. They offer high liquidity, meaning investor can easily redeem their investment. The minimum investment is low as 500, making mutual fund accessible to small investors as well. All right. So these are some basic features of mutual fund. Why investors? Why it is helpful for the investors and all. So role of mutual fund. The question was designed based on this particular one.
So mutual fund allow investor to invest their saving across a wide range of securities and diversify their portfolio as per their objectives and goals. Mutual funds are managed by professionals of fund manager who are responsible for taking smart decision in order to maximize yield or return while mitigating risk in their investing decision. Relatively high liquid, like we can have small investment in all. Certain mutual fund investment are tax efficient and serve as income tax shield for investor, as I gave you an example of ELSS, equity linked saving scheme. All right. Chalo, next question, guys. How do a mutual fund help investor in tax planning? So now it is clear to all of you, right? So by providing complete tax exemption, no, by offering certain tax efficient investment options that act as income tax shield for this particular one. As we have an example of ELSS here. So like mutual fund as equity linked saving scheme offer a tax benefit under section 82, section 80C of Income Tax Act 1961, reducing tax. Some mutual funds have tax efficient growth securities as well, where capital gain taxation is lower compared to direct stock investments and all. So these are some tax benefits which are generally associated with the mutual funds. Okay, next one. Which of the following statement correctly describe the role of SEBI, Securities and Exchange Board of India, and MFI, Association of Mutual Fund in India, in the supervision of mutual fund in India? Now, see, guys, team. So, SEBI is a market regulator for mutual funds. Team. So, mutual funds in India, they are regulated by SEBI. Earlier, there was money market mutual fund. They get regulated by RBI, but nowadays we do not have their existence in all. Team. But mostly आपका the mutual fund activities are get regulated by SEBI itself. ठीक है? The MFI is a kind of self-regulatory organization, as we have IBA, Indian Bank Association for Banking and banking things, as we have Foreign Exchange Dealers Association of India फॉर फॉरेक्स बिजनेस, ठीक है. तो ये इन दोनों को हमने पास्ट में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. जैसे लाइक व्हाट वाज द रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कि टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू फॉरेक्स डीलर्स or to resort dispute between different entities, or to raise their concern again in front of government of India and RBI. So वैसे ही आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी एंटिटीज हैं वहां पे ये जो काम है वो कौन करता है? एमफी करता है, ठीक है. एंड सेबी इज अ मार्केट रेगुलेटर्स, ठीक है. So SEBI and MFI both act as regulatory authorities. No, both are not regulatory authorities actually. It is a self-regulatory authority. SEBI is a primary regulator, while MFI act as a self-regulatory organization to uphold best industry practices. ठीक है, तो option B will be right answer for this particular one. So SEBI, Securities and Exchange Board of India, is the primary regulator responsible for overseeing and enforcing regulations in the mutual fund industry. Association of Mutual Funds is not a regulator, but it is a SRO, self-regulatory organization that promote best practices and act as a facilitator. ठीक है, तो first we will discuss around these two things also. ठीक है, so supervision of mutual funds. So we have SEBI, Securities and Exchange Board of India, as a regulator, and we have MFI as a SRO. Okay. So while the role of SEBI is a regulator of mutual fund industry, MFI, which is a SRO, play a role facilitator and uphold mutual fund industry best practices, like जैसे गाइडलाइंस फ्रेम करना या फिर आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एंड उनके जो कुछ कंसर्न्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेबी तक पहुंचाना. ऐसे सारे एक्टिविटीज आपका जो एसआरओ के द्वारा हैंडल होते हैं. जैसे वी हैव आपका आईबीए, वी हैव फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वैसे ही हमारे पास आपका है आपका एमफी. ठीक है, एमफी के ऊपर एक क्वेश्चन और देन इसके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी रोल ऑफ एमफी? तो आपका टू एनफोर्स रेगुलेटरी लॉज, नो, इट इज डन बाय सेबी. To act as SRO that facilitate industry standards and best practices. Understood? ठीक है, आसान है, ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया. Now with this particular chart
we will be understanding the role and responsibilities. ठीक है? So MFI was created in 1995. Very important, हाँ, बहुत important है ये, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? As a non-profit organization, the objective are to promote best practices and code of conduct in all areas of operation of mutual fund industry, to maintain high professional and ethical standard in the mutual fund industry, to interact with SEBI for betterment of mutual fund industry, to make a representation to the government, RBI and other regulatory bodies on matters relating to mutual fund industry for ease of doing business. Develop a well-trained agent distributor network for mutual fund industry, to promote a nationwide investor awareness program in order to make the investor understand the concept and working of mutual fund, to disseminate information on mutual fund industry and undertake studies and research directly and or association with other bodies. MFI has also set up a committee on the valuation of mutual fund, committee on best practices, committee on RBI related matters, and committee on registration of MFI, certified distributors for reviewing and evolving the standards in mutual fund industry. ठीक है? So these are the activities, or these are the major objectives which are generally followed by Association of Mutual Funds in India. ठीक है, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा सभी लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, which of the following statement about the evolution of mutual funds in India are correct? तो म्यूचुअल फंड्स के आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 स्लाइड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, इट हैज 4 phases, phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. Phase 4 is the current one. ठीक है, so UTI was established in 1963 by Act of Parliament and was initially under RBI control. बिल्कुल सही है. Now it is like later on 1993 or 94 it get converted in Axis Bank. ठीक है, तो इसका बैंक भी था. देन एक्सिस बैंक का पुराना नाम ही आपका यूटीआई था. ठीक है, द फर्स्ट म्यूचुअल फंड रेगुलेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन 1987. नो, इट वाज इन 1993. ठीक है, म्यूचुअल सेबी म्यूचुअल फंड एक्ट 1993. सेबी म्यूचुअल फंड sorry, SBI म्यूचुअल फंड वाज द फर्स्ट non-UTI mutual fund. Yes, हाँ बिल्कुल 100% true. But I'm little bit doubtful about this particular time duration. ठीक है, I'll first we will see the options. ठीक है, private sector mutual funds were allowed to enter in 1993 along with this particular act. Kothari Pioneers was the first private sector mutual funds registered in India in 2001. ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर, हाँ बिल्कुल सही. ठीक है, तो अब हमारे पास है हमें क्या ढूंढना था आपका, what we have to find out correct statement. UTI was the first step in 1963. This नहीं, नॉट अंडर आरबीआई कंट्रोल, तो ये आपका गलत है, सॉरी. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आरबीआई कंट्रोल नहीं है आपका ये, सॉरी. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग. ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड 1983, हाँ ये सही होगा. ठीक है, ऑलमोस्ट. सो 345 है कहीं पे? नहीं है. ठीक है, वन what we have to find out correct statement. ठीक है, 1 3 4 और अच्छा ओके, आई जस्ट वांट टू चेक दिस ऑप्शन ए 1 3 4. अच्छा 1 3 4 1 3 4. ओके, चलो फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू दिस. वन इज अच्छा ओके, इट वाज अंडर आरबीआई कंट्रोल डायरेक्टली. ठीक है, so this is means now we have to erase few things from this one. ठीक है, so this was directly RBI control, under this RBI control. ठीक है, and then second statement is incorrect. First mutual fund regulation was introduced in 1993. तो ये हमने आपका इनकरेक्ट बताया था, 1993 करेक्ट है. ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड वाज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड 1987. ठीक है, 1987 ट्रू है. ठीक है, fourth statement is private sector mutual fund was allowed 1993. This is Kothari Pioneer was first private sector
म्यूचुअल फंड, अच्छा ओके, इट वाज रजिस्टर्ड इन 1993 नॉट इन 2001, ठीक है, सो इट वाज रजिस्टर्ड इन 1993, ठीक है आपका, अलोंग विद दैट पर्टिकुलर एक्ट, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो, तो क्या है हमारा पहला, दूसरा एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा. नाउ वी विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल, ठीक है. The mutual fund industry in India started in 1963 with UTI, Unit Trust of India, at the initiative the Government of India and RBI. The evolution of mutual funds in India can be broadly categorized under four phases. Phase 1, UTI was established in the year 1963 by Act of Parliament. It was set up by the RBI and functions under the regulation and administrative control of RBI itself. The first scheme launched by UTI was UTI scheme in 1964, US 64. In the year 1978, UTI was de-linked from RBI. So it was de-linked from RBI in 1978, and the Industrial Development IDBI took over the regulation and administration of administrative control of UPI in place of RBI. At the end of 1988, UTI had 6,700 crores of assets under the management. Pehla phase. Second phase is 1987 marked the entry of non-UTI public sector mutual funds by public sector bank, LIC and GIC team. So SBI Mutual Fund was the first non-UTI funds established in 1987, followed by Canara Bank Mutual Funds या others आपके, ठीक है. So first को remember, you just have to remember the first one, ठीक है. Second one आपका phase 2, ठीक है, phase 3 sorry, ठीक है. With the entry of private sector in 1993, a new era started with Indian mutual fund industry, giving the Indian investors a wider choice of funds. Also, 1993 was the year first mutual fund regulation came into a beginning, under which all mutual funds except UTI were to be registered and governed. The Eastwhile Kothari pioneers, this is the one जो हमारा question था, now merged as Franklin Templeton, was the first private sector mutual fund registered in July 1993. In 1993, SEBI mutual fund regulation were submitted by a more comprehensive and revised mutual fund regulation in 1996, which is still in force. The number of mutual funds went on आपका जैसे बहुत सारे आज की डेट में. फोर्थ फेज आपका February 3rd 2003 आपका, following the repeal of UTI Mutual Fund 1963, UTI was bifurcated into two separate entities, which recent merger taking among the different private sector funds. The mutual fund industry has entered into a current phase of consolidation and growth, ठीक है. तो this is the entire history. हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, बट म्यूचुअल फंड की केसेस में व्हाट आई सी लाइक पिछले 5 साल में 10 पेपर में देर वॉज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड हिस्ट्री, ठीक है. तो जो फर्स्ट वाले हैं ना, एटलीस्ट जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ हमने डेटास आपका डिस्कस किए, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर और रिकॉल दैम, लाइक जब भी आप एग्जाम में जाते हैं उससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है. चलो. Rajesh, a 30-year old salaried employee, want to invest in a tax saving instrument under section 80. So जिसके लिए हमारे पास ELSS वो consider करा due to potential for high return in relatively short lock-in period, that is usually 3 years. While researching, he find that ELSS funds primarily invest in equity and equity related instruments. तो कितना होता है यहाँ पे आपका ELSS आपका जो स्कीम है, ELSS schemes 80% इन्वेस्टमेंट गोज टू आपका इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. However, he is concerned about the liquidity as he may need funds before retirements. Okay, based on the given cases, which of the following statement is correct regarding Rajesh investment in ELSS? Okay, correct statement हमें ढूंढना है, ठीक है. So Rajesh can withdraw his investment anytime. No, there is a lock-in of 3 years. ELSS has a mandatory lock-in of 3 years. बिल्कुल सही. After which he can redeem his investment. B सही है. ELSS require a minimum 50%. No, it is 80%. 80% of investment in equity and equity related instruments. So what will be our correct answer?
बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वेरी नाइस क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जामिनेशंस के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली बेस्ड ऑन द रेफरेंसेस क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे इतने बड़े बड़े रेफरेंसेस होंगे ना, क्वेश्चन विल बी ऑलवेज एट इजियर साइड. ठीक है, बट अगर आपको ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, ELSS it has 3 years lock-in and 80% investment that generally belongs to equity and equity related instruments. ठीक है, सो हाँ, नॉट डी, इट इज बी. बी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, so ELSS scheme, an open-ended scheme, linked saving scheme, statutory thus 3 years lock-in period. Yeah. Minimum investment in equity and equity-related instruments is how much? 80%. So link which is like ELSS 2005 notified the Ministry of Finance. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Which type of funds in debt and money market securities with a maturity up to 90 days only. ठीक है, तो 90 days आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरी इज लाइक दैट इज लेस देन 1 year, दैट इज योर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं बेसिकली. सो लाइक वी हैव द अदर वन इज लाइक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन लिक्विड फंड्स एंड लो ड्यूरेशंस. आपका जैसे ये है लिक्विड फंड्स एंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ओके, इनको नहीं, इनसे नहीं, इनसे समझते हैं. ठीक है, सो वी हैव दीज म्यूचुअल फंड लाइक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आपका. ठीक है, सो इक्विटी स्कीम्स वेयर बेसिकली और मेजरली द मनी गेट इन्वेस्टेड इन इक्विटीज शेयर्स आपका. ठीक है, debt is basically where fund manager they generally invest most of the portion of money in bonds. Hybrid where we have a combination of equity and debt. We have a combination of equity and debt. Sometimes it is 60-40 or most of the time it is 60-40. ठीक है, और it can be 50-50 or 70-30 also. ठीक है, solution oriented funds आपका. ठीक है, it is something related linked with some लाइक जैसे आपका क्या हो सकता है, जैसे ग्रीन एनर्जी रिलेटेड हो सकते हैं या अदर्स आपका. या आपका मिड कैप ओरिएंटेड हो सकते हैं या आपका जैसे टैक्स बेनिफिट के ऊपर हो सकते हैं या फिर आपका रिटायरमेंट के अराउंड आपका हो सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के अराउंड, मैरिज प्लान के अराउंड दिस. अदर में आपका जैसे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ये सारी चीजें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, सो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आपका जनरली ये एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे यू कैन एंटर एंड एग्जिट एनी टाइम. ठीक है, तो लेट्स से आज आपने बात परचेज किया, यू कैन सेल देम इन आफ्टर 10 days और 15 days. ठीक है, और यू कैन होल्ड टिल मेच्योरिटी. ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ लॉक इन ऑब्लिगेशंस एंड ऑल. ठीक है, तो जब भी ये एनएफओ के थ्रू आपका लॉन्च होता है उसके बाद जैसे इक्विटीज आपका ट्रेड होते हैं वैसे ही ट्रेड हो रहे होते हैं. ठीक है, एंड ओपन म्यूचुअल फंड स्कीम इज वन available for subscription and repurchase on a continuous basis. The scheme do not have a fixed maturity period and all. ठीक है, so a close ended आपका they have a fixed maturity period. Sorry, minimum lock-in period. ठीक है, so close ended is like they also get listed through NFO. If you want to invest in these type of mutual funds, so you have to purchase unit at the time of listing of that particular one. ठीक है, and then you cannot exit till a for a specific time duration. Usually it is 3 years. It can be आपका more than that also. ठीक है, so a close ended funds or scheme is stipulated maturity like 3 to 5 years. The fund is open for subscription only during a specified period at the time of launch, which is through NFO, new fund offer. Investor can invest in the scheme at the time of new fund offer and thereafter they can buy or sell the unit of scheme on stock exchange where the unit are listed. In order to provide an exit route to the investor, some close-ended mutual fund give option of selling back the unit to the mutual fund through periodic repurchase at NAV related to prices. SEBI regulation stipulate that at least one or two exit route is provided to the investor, either repurchase facility or through listing on stock exchange. This is very important one, and this we have discussed in like in our very first question. आप लोगों को याद हो 29 यूनिट जब आपका ओवरव्यू हमने किया था, तो आई हैव प्लेस वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, इंटरवल फंड्स आपका, इंटरवल इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आपका. ठीक है, सो आपका इक्विटी एंड डेट के कॉम्बिनेशन. ठीक है, इंटरवल स्कीम्स आर लिस्टेड एज सॉरी आपका दैट इज हाइब्रिड. इट इज आपका इंटरवल इज आपका कॉम्बिनेशन ऑफ
open and close ended. ठीक है. So close ended funds, they are listed as close ended funds that allow purchase and redeem during specified transaction period. The transaction period has for a minimum of 2 days, and there should be at least 15 days gap between two transaction period. Okay. These funds have the feature of open-ended and close-ended, in that they are opened up for purchase for shares at a different interval. ठीक है. तो this basically यहाँ पे क्या हो रहा है कि like जैसे it's a kind of combination of this. ठीक है. They are remain open for few days. ठीक है. आप उस समय खरीद सकते हो. Then there will be a closure for 10-15 days. Then दोबारा से open होंगे, वहां पे आप उसको sell कर सकते हो इस तरीके से. ठीक है. Next one आपका active funds and passive funds. It is based on the basis of management of portfolio. Active is basically where we have very active participation by the fund manager. He is monitoring that particular one on regular basis, and on regular basis they are making they can make changes in their portfolio. जैसे आज उसने कोई शेयर खरीदे थे अपने म्यूचुअल फंड के लिए, कल वो हो सकता है कोई दूसरे खरीद सकें, या इस तरीके से आपका चर्निंग्स वहां पे होते रहते. एक्टिवली मैनेज बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फंड मैनेजर. पैसिव इज लाइक कि जहां पे दे आर इन्वेस्टिंग फॉर अ फिक्स टाइम ड्यूरेशन. जैसे उन्होंने आपका, जैसे लेट्स से देयर इज सम इंडाइसेस फंड. ठीक है. लेट्स से आपका निफ्टी के ऊपर आपका लिंक है, या किसी अदर इंडेक्स से आपका लिंक है, बैंक निफ्टी या अदर्स उनके साथ. ठीक है. So actively managed fund is a fund in which fund team make a deliberate decision about how to invest the fund's money on the perception of the fund team management or the uh, supporters of actively managed fund point to be to the act that active funds make it possible to beat the market index or to maximize the wealth of that particular fund. So that is the one. The expense in active funds higher compared to passive. Higher क्यों है? क्योंकि because they are doing churning. ठीक है. एक जगह उन्होंने खरीदा तो दूसरी जगह आपका बेच रहे हैं. इस तरीके से they are shifting their funds money from one security to another security on regular interval and all. ठीक है. तो यहाँ पे obviously आपका जो buy sell होगा it will cost it will increase the overall liability on that particular funds. ठीक है. Passive mutual funds are designed to mimic the return of particular index. For example, Nifty 50. A passive manager typically buy all the stocks that comprise the index. ठीक है. Manager of Nifty 50 funds, for example, would invest proprietary relative to market capitalization in the 50 stock in the Nifty 50 in order to achieve return in line with the index. आपका ठीक है. जितना जितना जैसे आपका निफ्टी ग्रो करते जाएगा वैसे वैसे वो भी आपका ग्रो करते जाएगा. ठीक है. यहाँ पे बट वी आर हैविंग लाइक we are studying the current market or current stocks and all. Accordingly, we are making our portfolios. जिससे हम आपका जो wealth maximization है उस पर काम कर सकें. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन गाइस. Which of the following statement about NFO are not correct? So you have to find out the incorrect statement. See, it is similar to IPO. जैसे आपका किसी कंपनी का इंट्रोडक्शन आपका प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है किसके थ्रू? आईपीओ, एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है. आई होप यू रिमेंबर दैट वन. सिमिलरली द इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. कभी भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो उसका इंट्रोडक्शन या उसकी जो लिस्टिंग है वो किसके थ्रू होती है? आपका एनएफओ के थ्रू, न्यू फंड ऑफर के थ्रू इन प्राइमरी मार्केट इटसेल्फ. ठीक है. एंड एनएफओ must remain open for 15 days for open-ended and close-ended except this. पहला आपका करेक्ट है. ठीक है. The minimum subscription amount for debt oriented and balance scheme at the time of NFO is 20 crores. It is 20 crores or 10 crores. I'll just check this one. The NFO scheme must have available for ongoing repurchase sales tradings within 5 days or 50, it is 15 days. ठीक है. An open debt oriented scheme must maintain average AUM of not 10 crore, it is 20 crores. ठीक है.
the NFO can be start making investment before the offer period close नहीं ऑफर पीरियड क्लोज होने से पहले आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है तो आपका पहला स्टेटमेंट इट इज 100% ट्रू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट हाँ इट इज ऑल्सो ट्रू ठीक है 20 करोड़ ठीक है एनएफओ स्कीम मस्ट बी अवेलेबल फॉर रीपर्चेज आफ्टर नॉट 5 इट इज 15 डेज ठीक सो हमें क्या ढूंढना था नॉट करेक्ट तीसरा चौथा पांचवा है इसमें कहीं पे तीसरा चौथा पांचवा तो सी शुड बी राइट आंसर और ज्यादा से ज्यादा डी आपका ठीक है ये हाँ डी आपका करेक्ट आंसर है दैट मीन्स दिस इज करेक्ट हाँ सॉरी गाइस तो ये आपका 5 बिजनेस डेज अलॉटमेंट अवेलेबल है प्लीज डू रिमेंबर दिस ठीक है एनएफओ स्कीम मस्ट बी अवेलेबल फॉर ऑनगोइंग रीपर्चेज सेल ट्रेडिंग विद इन 5 बिजनेस डेज फॉर अलॉटमेंट 5 to 15 डेज या कुछ तो ऐसा था ये आज जितना मेरे को याद है ठीक है चलो ठीक है ये 3 स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है और ये जो 2 स्टेटमेंट ये हमारे आपके रॉन्ग है ठीक है तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस particular one ठीक है so please do take care about these one so statement 4 is incorrect because open ended debt oriented is आपका 20 crores not 10 crores this was correct 5 incorrect because NFO can only start making after ये तो बहुत easy statement आपका था ठीक है चलो तो थोड़ा सा यहाँ से आपका देख लेते हैं ठीक है न्यू फंड ऑफर इट इज अ लिस्टिंग प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड द प्रोसेस थ्रू विच a mutual fund scheme launch a new mutual fund called NFO, new fund offer. In case of open-ended and close-ended schemes, the NFO should be open for 15 days. ठीक है, it was part of our question. ठीक है, 15 days आपका पहला ठीक है. The minimum subscription amount of debt-oriented and balance scheme. Debt-oriented means where maximum investments are generally made in debt funds, bonds. And balance is a combination of debt and equity. At the time of new funds offer should be at least 20 crores and that of other schemes shall be 10 crores. तो इनके लिए 20 crores है others के लिए आपका it is 20 crores ठीक है अगर वो आपका equity funds है तो 10 crores will fine. And average asset under management is 20 crores on half yearly rolling basis should be maintained for open ended debt oriented schemes. The scheme for which there has been an NFO should be available for ongoing repurchase sale of trading within 5 days of allotment. ठीक है आपका NFO जहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो स्कीम है आपका ठीक है तो दैट शुड बी अवेलेबल फॉर परचेज एंड री सेल्स एट 5 वर्किंग डेज आफ्टर द लिस्टिंग ठीक है जो NFO प्रोसेस आपका जैसे खत्म होगा तो उसके जस्ट विद इन 5 डेज आपका इट शुड स्टार्ट है ठीक है the NFO can make its investor only after offer close ठीक है so NFO can make investment जो भी फंड्स हमने रेज किया है उसका जो इन्वेस्टमेंट्स है आपका अलग अलग सिक्योरिटीज में only after the subscription period ठीक है it must allot the unit and send the account statement to investor within 5 days of closure of the NFO this is again very important statement ठीक है सो NFO से रिलेटेड आपका बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस प्लीज डू टेक केयर अबाउट देम अगला हमारा क्वेश्चन है रिस्कोमीटर के ऊपर है सो हाउ मेनी लेवल डिड अ रिस्कोमीटर इनिशियली हैव when introduced in 2015 it is 5 right now we have 6 ठीक है so 2016 onwards now we have 6 ठीक है जैसे आपका लो ठीक है इस तरीके से आपका मॉडरेटली लो ठीक है हाई सॉरी मीडियम मॉडरेटेड मीडियम हाई वेरी हाई ऐसे 6 पैरामीटर्स आपको इसमें मिलेंगे बट इनिशियली इट वाज 5 ओनली ठीक है सो इन 2015 as part of system by which mutual funds were to convey risk perception to investors SEBI replaced the color coding by the riskometer इससे पहले आपका कलर कोडिंग चलता था रेड ग्रीन येलो इस तरीके से ठीक है so riskometer had 5 labels when it introduced in 2015 itself okay? so 5 label in 2015 and 2000 in 2020 based on the recommendations of mutual fund advisory committee the guidelines for product labeling in mutual funds was reviewed and riskometer was modified to include a 6 label a pictorial representation of the risk to the principal invested in mutual fund product is deficit using the riskometer मतलब it is like कि जैसे मतलब जिन भी सिक्योरिटीज के अंदर लेट्स से देयर इज अ फंड्स वेयर वी collect 10,000 crore rupees
सो दैट 10,000 करोड़ गेट इन्वेस्टेड इन दीज मेनी सिक्योरिटीज, और उनमें आपका रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जैसे आपका लो, ठीक है, आपका लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, आपका हाई, हाई, वेरी हाई, ठीक है, सो दिस इज द वन, ठीक है, सो दीज आर द 6 लेवल ऑफ द रिस्कोमीटर्स, ठीक है, तो रिस्कोमीटर के अंदर आपके 6 लेवल जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, दिस स्टोरी इज सेम, ठीक है, so this we have discussed a pictorial representation of risk principal invested in mutual fund that depict the riskometers, ठीक है, so आपका लो है, देन आपका लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, हाई एंड वेरी हाई, ठीक है, सो प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज पर्टिकुलर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलो अगला आपका कैलकुलेशंस, which excel function can be used to calculate annualized रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग CAGR बोलते हैं, सो टू कैलकुलेट CAGR व्हाट वी जनरली यूज व्हेन टूल इन एक्सेल दैट इज नोन एज XIRR, ठीक है, सो XIRR टूल which generally help us to calculate the compounded growth of that particular mutual funds, ठीक है, so XIRR functions in Excel is used to calculate the internal rate of return IRR for cash flows occurring at regular interval, making useful for computing annualized return in mutual fund and in mutual fund investment. ये XIRR बहुत जगह यूज होता है, जहां पे भी CAGR आप कैलकुलेट करते हैं वहां हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, which of the following is not considered alternative investment funds as per SEBI regulations, ठीक है, so a private equity fund set up as limited liability partnership, it get included, a venture capital fund incorporated as a trust, an ESOP trust set up by SEBI, shares based employee benefit regulation, no, it is not part of this particular one, ठीक है, तो आपका it is not part of ESOP is something which is regarding to the listed company shares, ठीक है, or like it can be listed or unlisted, ठीक है, so whenever a company allotting some shares to their employees, ठीक है, so they generally comes under ESOP, ठीक है, तो ESOP आपका usually it is done by unlisted company, sorry, a hedge funds are registered under SEBI alternative investment, हाँ this is also part of this, तो क्या था नॉट आपका, सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है, ESOP ट्रस्ट सेट बाय सेटअप अंडर सेबी 2014 are explicitly excluded from being considered as alternative investment funds under SEBI alternative funds investment schemes, ठीक है, next one, which of the following statement regarding NAV are correct, so you have to find out the correct statement about आपका नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, NAV, सो म्यूचुअल फंड्स मस्ट पब्लिश द NAV of their scheme on daily at least once in newspaper, ठीक है, funds of funds scheme have extended time until 10 a.m. आपका the next business day updated NAV, ठीक है, NAV for all type of mutual fund scheme must be rounded off to a 2 decimal plan, ठीक है, NAV sale and repurchase price of mutual funds, ये सारे सही हैं, ठीक है, आई जस्ट हैव टू कंफर्म बिकॉज एज पर माई स्टडी दिस ऑल आर करेक्ट, अच्छा एक कोई तो गलत है, ठीक है, पहला दूसरा आज मैंने बहुत गलतियां कर ली है, ठीक है, सो इट इज अच्छा फर्स्ट वी विल चेक दिस, ठीक है, NAV which represent publish on daily basis by the mutual fund at least इन 2 daily न्यूज़पेपर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, न्यूज़पेपर का नंबर्स पे था क्या, अच्छा एटलीस्ट इन 1 न्यूज़पेपर, ठीक है, तो हमने आपका यहाँ पे गड़बड़ करी है पहले, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा, दूसरा प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड दिस, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट द म्यूचुअल फंड स्कीम आर अपडेटेड ऑन एमफी वेबसाइट एंड ऑल, ठीक है, so at 9 p.m. funds of funds scheme sell have an extended time up to 10 a.m. the following business day in regard with the NAV published and all, okay, this was correct, okay, C was the right answer, that means second and fourth हमें क्या ढूंढना था, incorrect statement, ठीक है, so first was incorrect and आपका थर्ड वर्ड क्या था आपका, ठीक है, तो पहला तो हमें समझ में आ गया एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, NAV फॉर ऑल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू 2 decimal प्लेस, ठीक है, इट इज नॉट फॉर ऑल टाइप, हाँ देयर इज सम स्पेसिफिक टाइप, आई विल, हाँ NAV have a round of NAV up to 4 decimal
places for index funds and all type of debt and liquid market schemes. For all equity oriented and balanced mutual fund, the fund house are required to round off NAV up to 2 decimal. ठीक है, तो जो स्पेसिफिक टाइप है आपका, ठीक है, ये कहाँ हमारा जो स्पेसिफिक टाइप है आपका इक्विटी ओरिएंटेड एंड बैलेंस फंड स्कीम, इट इज 2, अदरवाइज इट इज 4. तो यहाँ पे क्या था, एनएबी फॉर ऑल टाइप आपका लिखा हुआ था, इसलिए आपका गलत था. फॉर अदर्स इट इज 4 डिजिट. ठीक है, चलो, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जो हमें फंसा दे वो क्वेश्चन अच्छा है, तो उनको ध्यान रखना अच्छे से. चलो आगे बढ़. सो एनएवी ऑफ स्कीम नीड टू बी पब्लिश ऑन डेली बेसिस by mutual fund at least in 2 daily newspaper NAV. हाँ, तो ये सारा सेम आपका एक्सप्लेनेशन है what we have discussed in our previous one. ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको. नेक्स्ट वन, what does annualized return method CAGR help in mutual fund investment in? तो आपका बेसिकली कंपाउंडेड जो ग्रोथ है उसको, the simple interest return on investments over the period. No, the growth of an investment as if it had grown at a steady rate and an annual compounding basis. 100% true. Yeah. Short term returns and all. ठीक है. So option B will be right answer for this one. So annualized return methods calculate the compounded growth, that is known as CAGR rate of an investment over multiple years, assuming a steady rate of returns. ठीक है. So we have two methods to calculate growth. ठीक है. So calculating return on mutual funds, we have two ways. One is absolute return method. Another one is annualized return or CAGR method. ठीक है. Absolute return is simply like जैसे हमने 5 लाख इन्वेस्ट किए and it become 10 lakhs in 3 years. तो 5 लाख का 10 लाख 3% आपका 100% का जो ग्रोथ रेट है पिछले 3 साल का. ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट इज समथिंग कि हमने 5 लाख इन्वेस्ट किए, 3 इयर्स के अंदर वो पैसा आपका 10 लाख हो गया. दैट मीन्स the growth is 100% during that particular period. But in case of annualized return methods आपका, जहाँ पे हम लोग उसको like year on year basis, so like first year return was this and जो compoundings आपके हुए हैं and all they generate. So absolute return आपका, it is a simple increase decrease in investment in term of percentage and does not consider the time taken for the change in the value of investment. ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे क्या है, 5 लाख रुपए. ठीक है, सॉरी, the value of investment, the market value of investment is 7 lakh and ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड वाज 5 लाख. तो 2 लाख का इनका फायदा हुआ है. सो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें, इट इज 40%. डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डेट ऑफ रिडेम्पशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस. बट यहाँ पे आपका एनुअलाइज रिटर्न मेथड्स आपका, दिस मेथड इज आइडियल फॉर इन्वेस्टमेंट पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर. ठीक है, an investor need to calculate the compound average growth rate over investment period. It measured the growth of an investment as it had grown at steady rate on annual compounding basis. ठीक है, तो CAGR आपका हम compound average growth rate is आपका current value divide by beginning value आपका power 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1. ठीक है, सो इट इज आपका जहां पे इट कैन ऑल्सो बी मेजर यूजिंग XIRR फंक्शन इन एक्सेल. ठीक है, तो जहां पे हमारा पिछला क्वेश्चन था. ठीक है, इतने छोटे से लाइन से आपका जो क्वेश्चन हमने पिक किया था. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the absolute return method is correct? So we have to find out the correct statement and consider time period for investment while calculating return. It is suitable for investment held more than, पहला statement correct है, more than 1 year. It is हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट और इनकरेक्ट है. इट कैलकुलेट रिटर्न एज सिंपल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम. एब्सोल्यूट, ओके, हाँ सॉरी, एब्सोल्यूट रिटर्न है. सो दिस इज आपका, सो दिस इज आपका CAGR कंपाउंड वाला केस. एब्सोल्यूट के केस में आपका ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, एब्सोल्यूट वाला आपका केस है, दैट मीन्स दिस केस. ठीक है, सिंपल आपका परसेंटेज, वी डू नॉट कंसिडर द टाइम. और आपका हेल्पफुल कहाँ पे हो सकता है, वो 6 मंथ हो या
आपका 6 years हो, ठीक है, बिकॉज टाइम का कोई यूज नहीं, बट अनदर मेथड्स आपका जहाँ पे हम लोग यूज दिस एंड वी यूज दिस फॉर्मूला एज वेल, ठीक है। चलो, what is the purchase price per unit if NAV is 10 rupees and exit load is 1%? तो 1% माइनस हो जाएगा. Exit load is kind of कि मतलब like it is a price when you exit. दो तरीके से फंड्स होते हैं, एक तो लोड फंड्स, अदर वन इज नो लोड, ठीक है. नो लोड के अंदर आपका दिस कॉस्ट इज, हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा कॉस्ट नहीं होता, ठीक है. बट आपका इन केस ऑफ लोड फंड्स, ठीक है, पहले आपका एंट्री लोड भी होता था, वो तो हटा ही दिया कंप्लीटली आपका, ठीक है. एग्जिट लोड अभी भी बहुत सारे फंड्स में होता है, व्हाइल यू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, ठीक है. सो यू हैव दैट मनी विल बी डिडक्टेड. तो अब 1% है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 9.90, ठीक है. 1% ऑफ 10 रुपीज इज आपका 0.10, सो आपका 10 पैसा मतलब, ठीक है. तो 9.90, तो एंट्री लोड और एग्जिट लोड, ठीक है. तो इसके बेसिस पे दो टाइप के, एक लोड फंड्स आपका, एक नो लोड. लोड आपका जहां पे बेसिकली एग्जिट के समय में आपका कुछ डिडक्शंस होंगे, ठीक है. नो लोड में आपका ऐसे डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है. So load, no load funds, or load funds is one that charge percentage of NAV for entry or exit. The load structure is in a scheme has been disclosed by the fund scheme in its offer documents. Usually आज के डेट में नहीं होता, पहले ये होता था, फिर आपका सिर्फ एग्जिट लोड रखा गया था. आज के डेट में एज पर माई स्टडीज इन ऑल, अभी एग्जिट लोड भी नहीं है, ठीक. बहुत रेयर केसेस में मिलेगा. So अगर होगा भी, so whenever company will come up with their NFO, so they have to disclose this one, ठीक है. Suppose NAV is this, ठीक है. A no load funds is one that does not charge for entry or exit. It means the investor can either enter other funds scheme at NAV and no additional charges are payable on purchase or sale of unit. SEBI has mandated that no entry load can be charged फॉर एनी म्यूचुअल फंड. देखो यहाँ पे क्लियरली आ गया नो एंट्री लोड आपका, ठीक है. ये आपका दिस अमेंडमेंट केम अराउंड 2013 और 14 समवेयर, ठीक है. तो जहाँ पे ये चीज आपका किया गया था, एग्जिट दे कैन बी, ठीक है. अगले आपका, which of the following correctly differentiate STP systematic transfer plan and SWP which is systematic withdrawal plan. अगले दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज पे योर अटेंशन, ठीक है. सो आपका STP एंड SW, देखो STP क्या होता है आपका, लाइक लेट्स से they have a benefit कि you can switch your investment from one scheme to another scheme, ठीक है. Systematic transfer plan is like let's say you have your money in scheme A, तो you can shift that particular one from scheme A to scheme B, ठीक है, ऐसा. और आपका सिस्टमेटिकली विदड्रॉ प्लान इज समथिंग लाइक जैसे होता है ना आपका, जैसे काइंड ऑफ कि आपका रिटायरमेंट्स के संबंध में आपका, लेट्स से यू हैव इन्वेस्ट मेड सम पेमेंट्स, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी सिस्टमेटिकली विदड्रॉल, ठीक है. हर महीने 5,000 रुपए या 10,000 रुपए जो भी हो आपका कम होते जा रहा है, मिलता जा रहा है, ठीक है. STP ट्रांसफर फंड्स, नो नॉट STP आपका, हाँ सॉरी, STP ट्रांसफर द फंड्स, ठीक है. STP transfer the funds between mutual fund while SWP allow periodic withdrawals from the mutual fund. पहला ही करेक्ट है, ठीक है, हमें करेक्टेड ढूंढना है ना. STP is for withdrawals money, no. STP investing fixed, no. SWP is used to invest, no. ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ओनली विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. सो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हेल्प इन्वेस्टर टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर. Systematically withdrawal plan allow investor to withdraw money at fixed interval to generate regular incomes, ठीक है. चलो, तो ये तीन स्कीम आपका जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, एवरीबॉडी नोस अबाउट दीस वन, ठीक है. सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एंड सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, ठीक है. तो ये SIP तो हर कोई जानता है, ठीक है. इट इज अ रेप्लिका ऑफ योर RD और बहुत बड़ा मतलब इसने इम्पैक्ट डाला है मार्केट में, म्यूचुअल फंड मार्केट में, ठीक है. देन आपका सिस्टमैटिक एंड आपका दिस, ठीक है. सो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट बाय स्मॉल इन्वेस्टर. मोरओवर there is a proportion of investing population which may not require the redemption to be lump sum but would prefer to have payments in installments, ठीक है. जिनके लिए आपका क्या सही रहेगा, SWP आपका नेम. Keeping in view, so we have these three strategies. One is SIP, systematic, initially small amounts investment and all, which generally promote those particular things. So SIP
is a mode of investment in mutual fund. तो जहाँ पे हम लोग, let's say there is one ABC mutual funds, you want to invest in that particular, but you do not have that much of money, like 5 लाख 10 लाख 1 करोड़, ठीक है, you recently joined your job, तो what you can do, you can start with 500 rupees per month or 5,000 rupees per month in same mutual funds, ठीक है, तो regular basis पे आपका, जैसे let's say NAV was 10 rupees at that time when you first invested, so 10 rupees 5,000 divided by 10 means you will get 500 unit of that particular one. Next time again you invested 5,000 and the NAV was that time was 11 rupees, तो 5,000 divided by 11, तो इस तरीके से हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट अलॉट होते रहेंगे, तो ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट एंड द एवरेज बाइंग प्राइस, ठीक है, जो डिफरेंस होगा आपका, दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है. So SIP also known as goal based investment, and SIP generally referred in the context of equity funds. SIP individual purchase mutual funds units at regular interval in a small quantities. It can be 500 rupees in all. The frequency of SIP can be fortnight, monthly and quarterly. Usually we do on monthly basis. और सबसे बड़ा मार्केट है म्यूचुअल फंड, सही है, इसको बहुत ज्यादा फैला दिया, ठीक है. Systematic transfer plan, STPs. So STPs is a technique through which an individual give consent to mutual fund company to transfer money from one scheme to another in a systematic and periodic manner. In STP, individual can transfer their money only from one scheme to another of the same fund house and do not of others. One thing you have to remember, like let's say आपके पास SBI म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम है, स्कीम ए, यू कैन रेमिट फ्रॉम ए टू बी ऑफ SBI म्यूचुअल फंड. अब ऐसा नहीं कि SBI से आपका आदित्य बिरला में होगा, दैट इज नॉट अलाउड. द STP इज सुटेबल फॉर इंडिविजुअल हु हैव एक्सेस आइडियल मनी lying in their accounts and are reluctant to invest the entire amount into equity funds. A result through STP, individual can first invest the money in liquid funds, then they can transfer equity funds to their choices as well. ठीक है. Systematic withdrawal plan, SWP, are the opposite of SIPs. ठीक है. SWP, individual redeem money from mutual fund scheme in small amounts. This is situation individual first deposit the money in a mutual fund scheme whose risk is generally low, such as liquid funds. Thereafter, the individual can redeem the money from mutual fund scheme on regular interval and all. ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ये काम कर रहा है, SIP का जस्ट अपोजिट आपका. ठीक है, नेक्स्ट वन. चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इन म्यूचुअल फंड? सो investing a lump sum amount in one mutual fund and periodically switching. So this is आपका periodically switching amount to another mutual fund. Investor has a fixed some regulatory mutual funds and all. Withdrawing a fixed amount from the mutual fund आपका SWP. ठीक है. Reinvesting dividends नहीं, तो क्या होगा आपका आंसर? A will be right answer for this particular one. ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो आपका STP. नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज इट. सो दिस इज इट गाइस. आज का जो टॉपिक था दैट इज म्यूचुअल फंड्स, एंड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, एंड we have done a 100% coverage of all the subtopic, important subtopic of this particular mutual funds. I hope you understand these particular things very well. और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा. अगर कोई डाउट आता है, सो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज ऑन डाउट डैशबोर्ड. दोज हु आर वाचिंग ऑन ऐप and those who are watching on YouTube, you can mention it in the comment section, or you can the another mode is you can join this particular Telegram channel. आपको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया ग्रुप का, एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज. ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही करेंगे. I'll see you tomorrow. So unit number 42, which is all around the insurance things. Okay. So this is it from my side. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.